हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर चैप्टर्स ऑफ कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू फॉर naplex से बुक से हम जो है आज डिस्कस करेंगे एक न्यू लेक्चर्स को जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं, सोरियासिस। ठीक है जी। तो लेट्स वी स्टार्ट द सोरियासिस एज वेल। Psoriasis is the skin disorder that cause skin cells to multiply up to 10 times faster than normals। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्किन की मल्टीप्लिकेशन हुई है, एक डिजीज़ है। अगर उसमें कोई इन्फेक्टेड फंगल इन्फेक्शन आ जाती है तो वो उसको 10 टाइम फास्टर वो नॉर्मल से उसकी सेल साइज को इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है जी, या उसकी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ। तो दिस मेक द स्किन बिल्ड अप इनटू बम्पी रेड पैचेस कवर्ड विद द वाइट स्केल्स। They can grow anywhere, but most appears on the scalp, elbow, knees, and lower back. Psoriasis can be passed from persons can't. It's mean this is the not communicable disease. From one person to another person, they will not cross it. ठीक है जी। तो this is the psoriasis, which is mainly present in different locations as well on your body, and this is the multiplications which is 10 times more faster than normal growth of your skin. Okay, let's आगे जाते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस उसकी क्या होगी अगर इस तरह पेशेंट्स के आ जाते तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होगी। तो ये आपको ये प्रेजेंट करेगी कि सेल टर्न ओवर रेट 10 to 3 to 4 days। तो ये सेल्स अपने 2-3 दिन में या 4 दिन में ये टर्न ओवर करते हैं, चेंजेस आ जाती है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सोरियासिस exist, including plaque, 80% to 90% of cases, illners, gotides, pustular, erythrodermic and psoriasis। तो मुख्तलिफ मल्टीप्लिकेशंस हुई है प्लेइंग इन द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट एरियाज पे, जिसके अपने डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये नेम सोरियासिस अलग चीज़ है, स्किन सोरियासिस अलग चीज़ है। ठीक है, जो उसे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है, प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय लाइट पिंक मैरून कलर्स फ्लैग कवर्ड विद द सिल्वरी स्केल्स। जो कि आप लाइट पिंक कलर, पिंक मीन्स मैरून कलर, आपको ये उसके दाने टाइप ये स्केल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके पहले पहले ये इस तरह होती है। ठीक है, प्लेइंग are most commonly found on the elbow, knees, beak, scalp, and externally ears, canals, fingernails, toenails can also be affected, causing them to appear thick and crumbling। तो ये मुख्तलिफ एरियाज होते हैं जो कि आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं towards psoriasis। तो itching and irritation, the most common symptoms of the psoriasis as well, through many patients may be asymptomatic। तो मुख्तलिफ ये इचिंग इरिटेशन तो नॉर्मली होती है, लेकिन मुख्तलिफ और भी पेशेंट्स हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक्स होती है। इफेक्ट मैन एंड वुमेन इक्वली एंड ऑल्सो इट कैन occur at any stage as with dandruff and seborrheic dermatitis। psoriasis are less severe during warmer months। तो psoriasis जो warmer months होते हैं उसमें असर कॉमनली नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती as compared to dandruff and seborrheic dermatitis as well। वो कॉमन होती है जब भी विंटर कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ भी कॉमन होती है इन द वार्म कंडीशंस, लेकिन ये इतना वार्म कंडीशन में नॉर्मली ज़्यादा नहीं होते। ट्रिगर बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, स्ट्रेस एंड सर्टेन मेडिकेशंस लेबी नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी blockers, certain blockers, anti-malarial, lithium and withdrawal of corticosteroid therapy। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें ड्रग्स होते हैं जो कि इसके रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, ओबेसिटी एंड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो ये हो सकते हैं। मोस्ट केसेज ऑफ psoriasis are mild in severity, but death can rarely result from very severe। इतना सीवियर केसेस नहीं आते हैं, उसमें माइल्ड केसेस आ जाते हैं, वो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ कुछ ऐसे रेयर केसेस में पेशेंट जो है लीड टूवर्ड डेथ भी जा सकता है, लाइक psoriatic arthritis लीडिंग टू cause the morbidity of some patient as well। ठीक है, नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट कर नहीं करता क्यूरेटिव
remissions and exacerbations characterize the disease course of most patients. तो आपकी परमानेंट क्यूरेटिव नहीं है, लेकिन आपकी पेशेंट जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा, ट्रीटमेंट्स ओनली माइल्ड केसेस आर इंडिकेटेड फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट्स. कुछ माइल्ड केसेस होते हैं जो कि इतने सीवियर नहीं होते, उसके लिए इंडिकेट है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ले ले. ठीक है, कभी कभार ये खुद भी ठीक हो जाते हैं. तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, द फर्स्ट वन इज यूज. पेशेंट शुड बी काउंसल्ड टू सोक इन lukewarm water several times a week and apply emollients such as petroleum jelly to the affected areas immediately after bathing. तो आप जब भी बाथिंग करते हैं तो उसके बाद आप currently and you should apply immediately as well emollients petroleum jelly आप पेस्ट या उसको affected areas पे apply करें. Overweight obese patients should lose weight. The most important things you should you should avoid the वेट प्रोडक्ट्स जो कि आपको वेट देते हैं, तो उसको आप कम कर लें या उसका अपनी वेट को कम करा लें. पेशेंट हु स्मोक्स शुड बी causing smoke cessations. Alcohol consumption should be avoided. The patient should take measures to reduce level of stress. आप अगर स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, आपकी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, तो काइंडली वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर लें. अच्छा, सेकंड ट्रीटमेंट इज द corticosteroids salicylic acids are indicated for the treatment of psoriasis but may be preferred for those patients with psoriasis limited on the scalp areas. तो ये मोस्टली कोल्टार एंड सैलिसाइलिक से हम इंडिकेट कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ psoriasis, बट लिमिटेड यूज विद द psoriasis with the scalp areas. These agents should not be applied to the large areas of the body, while specifically some patients we have specific areas, तो उसको आप अप्लाई करें होरिज़ोनटली या सिस्टमिकली यूज ना करें. ठीक है. हाई कार्टिसॉन्स, the third one is high cortisol may be also affected, but it is used should be limited to small areas of the body and should be not be used for more than 7 days without prior prescribed approvals. क्योंकि ये steroids है, steroids have some most infections other produce कर सकते हैं, like kidney failure cause कर सकते हैं. कुछ आपके स्किल्स उसके जो है वो डिजीज विकास हो सकती है ड्यू टू सीवियर यूज ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, बिकॉज ये कंटिन्यूसली आपके जो वो है जो इम्यून सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट करा के आपके और भी इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं आपकी बॉडी में. अच्छा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज मॉडरेट टू सीवियर डिफार has affected more than 5 to 10%. अगर है आपकी बॉडी 5 to 10% है और 90% वो क्योर है, तो ये मॉडरेट टू सीवियर पे डिजीज है. तो आप प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ में आप टॉपिकली corticosteroid, bectamethasone, clobetasol, fluocinolones and triamcinolone are considered the first line agents. You should go and take these medication as well, like clobetasol, bectamethasone, fluocinolones and triamcinolone for the moderate to severe disease. ठीक है. Now for the treatment of psoriasis, these agents are usually topically applied twice a day. Systemic side effects are more likely to with longer course of therapy and exactly अगर आप ज़्यादा 4 वीक से आप ज़्यादा लेते हैं तो इससे आपकी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं. These agents are also available in vehicles such as foams, स्प्रेज, शैम्पूज, मुख्तलिफ चीज़ों में ये जो है मेडिकेशन अवेलेबल है. अच्छा, टॉपिकली वाइटामिन डी एनालिसिस आप ये ले सकते हैं, इंक्लूडिंग कैल्सो, पोट्रियान, डोमिनिक्स एंड कैल्सिट्री, ट्रायोल, विक्टिसाल may be used for monotherapy through they may be more effective when used in conjunction and topical steroid as well. तो ये monotherapy भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंजक्चुअली कुछ अदर डिजीज या कुछ जो corticosteroids के साथ जाते हैं तो आप अकेले यूज़ कर लें. इट्स मीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप वाइटामिन डी के प्रोडक्ट को यूज़ कर लें फॉर द स्किन इरेक्शंस के लिए. ठीक है. अच्छा, तजारुटीन tazorik the topically retinoids available is both a cream and gel for the long treatment of psoriasis. तो आप तजारुटीन्स के उस पर जाए, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है एज वेल तजारुटीन्स के नाम पे. तो आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या क्रीम जेल्स पे आप सोरियासिस के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं.
अच्छा, कैल्शियम इनहिबिटर्स सच एज टेक्रोलेमस, अगर सीवियर वो है डिजीज है तो आप उसको इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कराने के लिए कुछ टेक्रोलेमस प्रोटॉपिक या पाइमक्रोलेमस क्रोलेमस या ये ग्रासोफलविली है, ये टाइप चीज़ें आप प्रेफर कर लें when treating severe to on the face, armpits or genital areas, ये breast, as this may avoid requiring patient to apply corticosteroid to those sensitive areas. However, these grants agents carry a black box warning, लेकिन आप जो है यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू पोटेंशियल लिंक टू लिम्फोमा एंड स्किन कैंसर्स, but you should go toward the calcineurin inhibitors if the patients have morely, आपको पता है कि this is the severity और severity से और भी ख़राब हो जाती है, तो आप जो है वो calcineurin inhibitors या methotrexate उस पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, various systemic therapies are used in the management of moderate to severe psoriasis. First one is the methotrexate is given low dose once a week to help manage psoriasis. Once a week आप use कर सकते हैं. It may be effective to treat with psoriatic arthritis as well. Methotrexate should be used cautiously if at all patients with the hepatic disease due to hepatotoxicity. Methotrexate is classified in FDA pregnancy category drugs, so आप pregnancy में use नहीं कर सकते. But the most important thing is कि अगर आप methotrexate start करते हैं तो पेशेंट्स का या आपके हेल्थ केयर वर्कर को चाहिए कि आपको आपके लिए जो हेपेटिक्स एग्जाम्स है उसको चेक करा ले. अगर वो ज़्यादा है तो आपकी हेपेटोटॉक्सिसिटी की चांसेस ज़्यादा हो सकती है. एक बात ये होगी. दूसरी बात ये कि आप वंस अ वीकली आप डोज दें, उससे ज़्यादा ना दें, ठीक है. Acetyltrains, psoriasis, synthetic retinoids, vitamin derivatives. The agents is normally reserved for the patient with severe psoriasis. Acetyltrains is classified in the FDA pregnancy category X because studies have shown that is the parents chemicals acetyltrains can be detected in the body up to 2 years after discontinued therapy. It is recommended that women of the childbearing position who have taken acetyltrains non-conceives for 3 years following discontinuation of medications. तो ये है विटामिन ए की जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंस है फॉर द यू. और ये दोनों थेरापी आप उसमें प्रेगनेंसी कैटेगरीज में आप नहीं यूज़ कर सकते. मोस्टली एसेट्रेटिन कैप्सूल्स ये काफ़ी हद तक आपको सीवियरिटी पे ले जाता है और ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में आपके लिए आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, immunosuppressive medications such as cyclosporins, Gingrafs, azothioprine, imorans, and hydroxyurea, droxia may be used in a patient with severe psoriasis, while other therapies are not tolerated. But अगर आपकी अदर वो टॉलरेटेड नहीं है तो आप azothioprines या cyclosporins, hydroxyurea आप जा सकते हैं. Of these three, cyclosporins is the one of the FDA approved for treatment of psoriasis. A patient taking cyclosporin should be monitored for adverse effects. Noticeably, आपको nephrotoxicity हो सकती है, हाइपरकेलेमिया हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है. जब आप साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर ले तो आपको अपने साइड इफेक्ट्स का जो है वो काशली एंड मॉनिटरिंग करनी चाहिए. बायोलॉजिकल एनाल्जेसिक्स is preferred treatment option for the patient with moderate to severe psoriasis. These agents have been shown to quickly improve psoriasis symptoms. Limited to use of these therapies include their high cost and the fact that they are administered via intramuscularly intravenous routes. Biologics that have been FDA approved for psoriasis includes adalimumab, Himuria, Elifisex, Imivives and Etanercept in ब्रेल्स. तो आप ये चीज़ें आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर द बायोलॉजिक एक्टिविटीज़ और ये हाई कॉस्टेड है. बट इफ़ द पेशेंट हैव सीवियर तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अदर्स एट लास्ट ऑप्शन ऑफ द सोरियासिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अगर पेशेंट्स को आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा ट्रीटमेंट पे तो यू शुड गो टुवर्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज़ बीन long been recognized as safe and effective treatment for the managing psoriasis. Various types of phototherapy are available to patients
All phototherapy treatments regimens should be initiated and managed by physicians or dermatologists. तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जब भी अगर पेशेंट पे सीवियरिटी आ जाती है सोरियासिस, तो आप जो है एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर द फोटोथेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसल्टेशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट. ओके, दिस ऑल अबाउट द सोरियासिस एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे और भी लेक्चर्स. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क इन कमेंट सेक्शन में. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.